This is Kamran Sultan, and I am answering some of your questions. One of the questions that I have received is it's basically a kind of a comment that somebody said, I'm not ready to leave any of my child to part with me. The fact that I know that they're going to get married, and five of them are married, and only one is left with me. So I can't control myself and feel so depressed so that I start quarreling with anybody. So then let's start crying and crying. Now, you just, it's these kind of things. The first thing I want you to understand is there's absolutely nothing wrong with you. Okay? Anyone who may be experiencing this called the fear of loss or the feeling of loss have these kind of experiences. Okay? हमारे यहाँ एक जो जनरल चीज होती है कि अगर हम कोई लॉस होता है और हम रोना शुरू करते हैं और अगर हम रो रहे होते हैं तो हमें लोग चुप कराना शुरू करते हैं, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। बट हमारा जो एक अल्लाह ताला ने जो हमारा सिस्टम बनाया है, इसमें एक इंटरनल विस्डम रखी है। और वो विस्डम जो है, यानी जैसे जैसे हमें अगर बुखार होता है, हमें गर्मी लगती है, तो हमारे पसीने आते हैं, उससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज होता है। अगर हमें ठंड लगती है तो हमारा जिस्म कांपता है, उससे हमारा बॉडी का टेम्परेचर नॉर्मलाइज होता है। इसी तरह जब हम हर्ट फील कर रहे हो, हम किसी किस्म का लॉस फील कर रहे हो, तो हमारे अंदर रोने की इमोशंस आते हैं और हमें रोने का दिल करता है। एंड इट्स परफेक्टली ओके टू क्राई। ओके, आई नो दिस में साउंड नॉट वेरी नॉर्मल। हमारे यहाँ जो लोग आमतौर से डोंट क्राई, आई सजेस्ट इफ यू फील लाइक क्राइंग, go ahead and cry. I strongly recommend cry your heart out. So all of that, जो भी इमोशंस आप अपने अंदर होल्ड कर रहे हैं वो रिलीज हो जाए। In addition to this, I want you to understand something, and that is this, कि हमारी जो भी फीलिंग्स, जो भी इमोशंस होते हैं, वो उन हालात, उन वाक़यात, उन सिचुएशंस की वजह से नहीं आते, जो हमारे साथ हो रहे होते हैं या हुए होते हैं या होने वाले होते हैं, बल्कि इस वजह से आ रहे होते हैं क्योंकि हम उसके बारे में सोच रहे होते हैं। तो बुनियादी तौर पे हम अपनी जो एहसासात होते हैं, अपनी जो भी हमारे एहसासात होते हैं, ये हमारी सोच का नतीजा होते हैं। इट्स लाइक एक स्टेटमेंट जो मैंने बेशुमार बार लोगों से सुना है, वो ये, मैं जितना फलानी चीज़ के बारे में सोचता हूँ या सोचती हूँ, मुझे उतनी ज़्यादा वो फीलिंग होती है। एंड दे आर राइट। सो बिकॉज़ व्हाट दे आर सेइंग इज़ कि अगर मैं उस चीज़ के बारे में नहीं सोचता, तो मुझे वो फीलिंग नहीं होती। यानी इफ यू हैव लॉस्ट समवन, and we all have lost someone we love. So if you have lost a loved one ever in your life, the fact is that that person is not in your life anymore. Lekin you do not miss that person until you start thinking about them. Okay, so हमारी जो feelings होती हैं, हमारी जो we start missing someone is because we are thinking about them. So हमारी जो feelings आती हैं, they are the result of our own thoughts, our own thinking, not the result of some event happening outside of our lives. Now, being a mother, being a parent, if you have this, that you are parting with your child, you may be experiencing this fear of or the fear of loss or losing a child. The fact is you have not lost a child, alhamdulillah. Okay, now अब आपका ये जो स्टेटमेंट था, आप इसको पढ़ के मुझे याद आया था, बिकॉज मेनी इयर्स अगो, अबाउट लाइक 27-28 years ago, मैं एक ट्रेनिंग में था और एक ट्रेनिंग में मेरे साथ एक खातून थी। हर सन she had 4 children, and four of her sons were, one of them was my age. She had 4 sons actually. And मैं उनको बता रहा था कि it's like I live with my mother, and like I'm married and I'm living with my mother. She was so surprised. This was a British woman, and she said, you know what, I raised my children so that they become independent and they live on their own. And now they have moved out. All of my sons are out. Her youngest son was 16 or 17 when he moved out, and she was, she told me about that. And what she said then, and she had like tears in her eyes when she said this. And she said, I really wish कि मेरे बच्चे मेरे पास होते, because that's being a human, that's being a mother, that's being a parent. हमारे जो बच्चे होते हैं, हमारी जिंदगी का, हमारी लाइफ का एक्सटेंशन होते हैं। And it's not easy. We give everything we can to the best of our abilities to our children. And when we have this sense that they are
parting from us. We may take this as like they're parting from us, or we may take this as कि हमने जिस चीज के लिए उनको तैयार किया था, जिंदगी के लिए तैयार किया था, they are able to do that. And even if they are not able, they are old enough that they should be able to do that. And that we have done our part. मैं इसको एक और पर्सपेक्टिव से भी आपको समझाऊं। अल्लाह ताला कुरान में जो फरमाता है कि शैतान तुम्हें मुफलिसी से डराएगा, यानी जो चीज तुम्हारे पास है उसके खो जाने के डर से। सो ये थॉट्स जो हमारे जहन में आते हैं, यू कैन ट्रीट देम एज अ वसवसा जो आपको शैतान दे रहा है। और यू कैन थिंक ऑफ इट कि ये वसवसे जो हैं ये हमारे अंदर आ रहे हैं। एनएलपी में हम एक चीज करते हैं जिसे कहते हैं पैटर्न इंटरप्ट। बहुत सिंपली पैटर्न इंटरप्ट ये है कि आप कभी किसी से बात कर रहे होते हैं और अचानक कोई फोन आ जाता है। तो आपकी जब आप फोन पे बात करके वापस आते हैं, देन यू हैव दिस क्या बात कर रही थी या क्या बात कर रहा था, बिकॉज आपकी जो कम्युनिकेशन का पैटर्न था वो इंटरप्ट हो गया। तो इसी तरह जब हमारे जहन में किसी किस्म के ख्यालात आते हैं, एंड इफ यू वांट टू ट्रीट इट एज अ वसवसा, किसी किस्म का कोई वसवसा, शैतान आपको नुकसान कि तुमने ये तुम्हारे बच्चे तुमसे अलग हो गए, तुम्हारे अकेली रह जाओगी या अकेले रह जाओगे, तुम्हारा क्या होगा, जब शैतान इस किस्म की चीज होता है, सिंपलेस्ट easiest pattern interrupt you can do is say la hawla wala quwwata illa billahi al-aliyyil azim, and repeat that long enough until it stops bothering you. Okay, and think in terms of कि rather than thinking कि वो मुझसे अलग हो गए, you can be black, you can say alhamdulillah they stayed with me for a long time. मुझे याद है बहुत साल पहले मैंने एक मूवी देखी थी जो ब्रूसली की जिंदगी पे थी। आई थिंक द ब्रूसली द ड्रैगन, द ब्रूसली स्टोरी उसका नाम था। तो मूवी जो थी उसका जो एंड था, उसमें एक डायलॉग उन्होंने जो ब्रूसली की बेवा थी उसको उन्होंने कोट किया था। And the dialogue was something like this. She said, all of these years, people have been wondering how Bruce died. I prefer to think how he lived. It's like we can think in terms of what we are losing, or we can think in terms of what we have been blessed with. It's a clear choice. So it's a choice for you that, if you feel like crying, go ahead and cry. Try all of those emotions out. It's perfectly okay. And then, if you have a friend that you can talk to, do that. It's like जितना ज्यादा हम किसी चीज को सोचते रहते हैं वो एनर्जी हमारे अंदर बिल्ट अप होती रहती है। जितनी ज्यादा चीज हमारे अंदर बिल्ट अप होती है तो फिर वो कहीं पे आर्ग्यूमेंट्स में, एग्रेशन में, इस तरह की चीजों में निकलती है। सो इफ यू हैव अ फ्रेंड, someone who can listen to, go ahead and talk to them. If you don't have anyone, you can try this. You can take a piece of paper and write it down. Write down whatever is in your mind. So just let those thoughts get out of your system. The other thing, this may sound weird, but I strongly recommend, if you have no one, go and talk to a pillow, okay, and speak your heart out. Just let those emotions go out of your system. Okay, let those thoughts go out of your system. Okay, you can write them, you can speak them out, but just let them go out of your system. What you will find is कि जितना ज्यादा आप उसको सोचती हैं, सो बेसिकली हम अपने उस उन एनर्जी, उन थॉट्स को एनर्जी दे रहे होते हैं, वो चार्ज अप हो रही होती हैं, एंड जितना ज्यादा हम उसको चार्ज कर रहे होते हैं उतनी ज्यादा स्ट्रांगली वो हमारे ऊपर इफेक्ट कर रही होती हैं। बट अगर हम उनको एक बार रिलीज कर दें और हम उसको कंप्लीटली रिलीज कर दें, देन यू विल फाइंड कि वो चीज आपको बॉदर करना छोड़ देगी, एंड द हीलिंग प्रोसेस टेक्स इन। नाउ इफ यू डोंट हैव एनीवन, I suggest find a coach, work with a coach, talk to a coach that will help you. So I hope these simple things, simple ideas are useful for you. Do let me know in your comments if it works for you. And if you think this can be useful for other people, share with them. And if you want to have your questions answered, please send me your messages. And inshallah, I'll make a video and respond to your question as soon as I can. So you can send me on my WhatsApp number. It's 01, that's the America code hai. Uske baad 908 500 9371. And you can send me your question, send me your comments, and I'll respond to that as soon as I can. So thank you very much. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.